अनिलजीत सिंह, चेयरमैन ऑफ मैक्स हेल्थ केयर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए और मर्जर से कस्टमर्स को फ़ायदा होगा ऐसा साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और चूंकि मर्जर का जो मकसद है वो क्षमता को बढ़ाना था और इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं, उसी कड़ी में भी इस मर्जर को देखा जा सकता है। हालांकि अभी तो 12 से 15 महीने का वक्त है जब ये मर्जर पूरे तरीके से फाइनलाइज होगा और मर्जर के बाद HDFC लाइफ NSE BSE पर लिस्ट हो जाएगा। Of the entire merged entity that you have pegged it around for the market cap of the listed entity to be, because HDFC, it will reflect in the HDFC's share price as well. So many questions. All interlinked. Well, the HDFC share in the merged entity will come down to around 42%. 42.5% to be precise. Standard Life share comes to around 24%, and there is a conditions of Standard Life that we must allow them to go up to 25 during the course of the next 3 to 6 months. So we may sell some and make them over 25, and that's a condition precedent to the. Now on the valuation, you will decide the valuation, not we. Now since Max Life is listed, we will become automatically listed. So we really don't know what the market cap will be, and we cannot even hazard a guess what will be the market value of the combined entity. But Max shares have run up significantly over the last 2 months. And let us see what it opens after now. Now the ratio is known in the market. The analysts will work on it, and then we'll see what it will settle down at. I'm sure. Yeah, what is the valuation of Max? You can do your maths. Why don't you just do your maths? It'll come to the No, if you number. could give us the number, it will the be... number changes every day because the value of Max Financial Services keeps changing on a daily basis. If you do your analysis and do your maths, the number will come somewhere around 65,000 crores. I'll not give you the exact number. We'll help you with the maths. Mr. Chaudhary, just a quick point. Sir, if we look at the trailing embedded value for both Max and HDFC, and just go by that, the ratio works out to about, you said attributable value to Max is 31%, right? And 69% for HDFC Life. Going by the trailing embedded value, it works out about 35% for Max. Whereas what you're telling us is 31%. 69 and 31. Yes. Could you just explain, how that has been worked out as? Maybe you should do that. Because what you are observing is on a straight line basis. Right. You're just sort of taking a multiple, multiplying it, extrapolating. If you give the same multiple to both, you get to about 35%. Yeah, but this is not a merger of multiples, no? This is a merger assets of two and companies liabilities. and assets and liabilities and so on. Mohit, go ahead. You are the best person to explain. So basically, what's happening here is that in terms of number of shares, this is 3 shares for 7 shares. That's the ratio, right? Now, your point regarding, 31 and 69, this is not a 1:1 kind of a swap. You basically, after the diligence was done, which was the vendor diligence, right, we worked out on the basis of the diligence findings, as well as the fact that in the case of HDFC, they have a captive bank. They come in with a captive bank, whereas in the case of Max, we have a relationship with Axis Bank, which is for 5 years. So that's temporary. Diligence findings also seem to suggest that there is excess capital sitting in Max. So if you ascribe a multiple, you only get a cash value, which is 1 time. So if you adjust for the cash value, the fact that you have a captive bank coming in this whole relationship, as against Max, you don't have one. You'll find that the swap ratios are worked out on the basis that it is 31:69, and that is 3 shares for every 7 So you're shares. saying that accounts for HDFC Bank, the captive bank portion It does. as well. It does, absolutely. So that's the reason. Absolutely. That's the main reason. Does it mean that Max has been valued at 20,500 crores? Look, I don't think you can get into these numbers. As Mr. Parikh had said, the markets is going to play out in terms of what the valuations finally end up in. Okay, so this is still some way to go. All we can tell you at this stage is post-diligence, based on the rationale I've given you, the swap ratio works out to 3:7.
Congratulations to my honorable team. If you could just throw some light, what are the specific concerns which were raised by IRDA, particularly on the slippage accumulating liability? Can they arise? And has there been any specific provisions that have been asked to made, or how has been it looked when the whole deal was worked out? No, we went and met the IRDA chairman. Mr. Anarjit Singh also went and talked to him. And our teams have been having elaborate discussion with all the members. And we don't get any impression from them that they are concerned about anything. So we don't think that there would be an issue with IRDA. So there is liabilities. There is no question of any exposure for policyholders for liability. That question doesn't arise. So between understandings between us, indemnities, assurances to IRDA, etc., that is, you should take as given. So obviously, even for example, the merger expenses, I'm sure that won't devolve on the policy holders in any way, right? I mean, or the contingent liability for that matter. Was that built into the kind of deal that you struck? Because on the face of it is a rather complex transaction. I mean, the way you first merged it into Max Financial, then demerged the life insurance business. It's not a very simple transaction per se. I mean, was that one of the reasons why the deal turned out to be a little complex? No, I think the inherent nature of the deal is complex. So it didn't turn out to be complex. It was always to be complex because there are three entities. In fact, 3.5, because as Amitabh said, there's Max India also has got a bit of a tail in there. So it was always to be a complex structure. As far as the merger expenses are concerned, Mohit, I think you are the right person, and Mr. Ajay Bail is from AZB is here. Ajay, if you want to say a word about that, but I think it's best left to these folks. So I think now, based on the cow path in terms of when this merger is finally going to crystallize, okay, as Mr. Parekh had said, it's about 12 months or so. So you're going to have two companies operating the way it is today. So whatever merger expenses are there in terms of lawyer fees or diligence fees is going to be part of the entities in which it's been done. So if I think, I hope I've addressed your question. Mr. Max Life Insurance business at 22,500 crore rupees as per the merger value and 42,500 crore rupees for HDFC Life. And could you also give us a basis of valuing HDFC Life at 43,500 crore rupees as per this particular? So I think you have to understand that we never got into these numbers while deciding the valuation of the two entities. Our basis for valuation of the relative valuation of the two entities was based on the embedded value of the two entities as of March 16, and we worked off from there and came up with the valuation. The 65,000 crore number which I have quoted, which you forced me to quote, is because Max Financial Services is listed, and based on that listing, there is a certain value which can be ascribed to Max Life Insurance, and based on the swap ratio, you can impute a value to HDFC Life. That's why I quoted a number, then maths can be done, and you're also insisting you want the math, we'll give you the maths. The number is higher than 65,000 crores. May I add? Yes, sir. Nothing has changed in journalism. I take my comment back. So, and by the way, since you asked about IDEA, I just want to add that IDEA, we have had preliminary discussions. IDEA is not going to start driving the merger structure upfront. I think we will have to go to them, and then they will really get into details of the structure. We have heard their comments, we have understood some of their concerns, and yes, we have incorporated some of the concerns if they have expressed it. I mean, we were also very proactively aware of it. We have ensured that whatever concerns they might have are being incorporated in the way the whole scheme has been designed, which you're calling complex. I mean, as Mr. Singh very rightly said, it had to be complex because there's the first merger of its kind in the life insurance sector, and that's why we have done it. That's how it is. Mr. Singh, there's a Ashwin Mohan here from Easy Now. Congratulations to everyone once again on the merger. Mr. Singh, you referred to Max as the bride in the transaction. So, since हेड रिसर्च मनीलिशियस कैपिटल अविनाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, इस मर्जर को इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं? कितना बड़ा एक्सपेंशन इससे हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर का? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अभी अनाउंस हुआ है
हमको लग रहा है कि ये भी काफी पॉजिटिव ही है, क्योंकि एक शेयर जो मैक्स शेयर होल्डर है उनको 2.33 शेयर HDFC लाइफ का मिलेगा जी। और इसकी लिस्टिंग भी पॉसिबली 2017 में होने वाली है। तो क्लियरली ये पहला मर्जर है। आई थिंक क्लियरली मार्केट में ये पहला डील हुआ है, बट ओवरऑल आई थिंक शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वैल्यू एक्टिविटी होगा जी। और कस्टमर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो उनके लिए कितना फायदेमंद ये हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से आगे चल के कस्टमर्स के लिए डेफिनेटली फायदेमंद ये होगा कि ये HDFC के नेटवर्क में ये प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। और हमें लग रहा है कि आगे चल के वेदर ब्रांड इंटीग्रेशन होगा कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एक बात तो सही है कि HDFC का जो पैन इंडिया कवरेज है, जितना इनका ब्रांड का लॉयल्टी है वो बढ़ेगी। मेरे ख्याल से जो कस्टमर्स है उनको डेफिनेटली एक बड़ी नेटवर्क और बड़े सेल्स फोर्स का थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। आई थिंक ये कहना मुश्किल है कि इमीडिएट बेनिफिट क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर में कंसंट्रेशन और कंसोलिडेशन की जो जरूरत है वो पहले मर्जर से ये साबित हो चुकी है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त TS हरिहर, चीफ एग्जीक्यूटिव, हमारे साथ HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। TS हरिहर जी, वेलकम टू जी बिजनेस। मर्जर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया। इंश्योरेंस सेक्टर के लिहाज से कितना बड़ा एक्सपेंशन आप इसे मानते हैं? देखिए, जो ट्रेंड में देख रहा हूँ, आई थिंक इट इज समवॉट लाइक जैसे म्यूचुअल फंड्स में हुआ था। म्यूचुअल फंड्स जब 25-30 साल पहले शुरू हुए थे, दिस वाज दिस मर्जर ट्रेंड हैपनिंग अबाउट 15 years बैक। ज्यूरिक था, फिर हमने देखा कि जो अलायंस बिरला से मर्ज हुआ, उसके बाद आई थिंक मॉर्गन स्टैनली, डॉयचे, काफी सारे जो फंड्स थे वो मर्ज होकर फिर इंडस्ट्री एक लेवल पे आया। तो आई थिंक वो जो ट्रेंड हमने म्यूचुअल फंड से देखा, वही ट्रेंड अभी इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है। और मैं मानूंगा इट विल बी ब्रॉडली पॉजिटिव, बिकॉज काफी हद तक डुप्लीकेशन हो रहा है, काफी हद तक कॉस्ट डुप्लीकेट हो रहा है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस मर्जर शायद से काफी हद तक ये सब रैशनलाइज होगा, एंड टू लार्ज एक्सटेंट ऑल्सो आई थिंक इट विल बी अ टेम्पलेट फॉर अदर इंश्योरेंस कंपनीज टू लुक एट मर्जर। और इंश्योरेंस सेक्टर में जिस तरीके के चैलेंजेस अभी हो रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके के एक्सपेंशन से वो चैलेंजेस फेस करने में आसानी होगी और साथ ही साथ चैलेंजेस खत्म भी होंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज फॉर इंश्योरेंस इज पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन के लिए आई थिंक दो चीजें महत्वपूर्ण है। फर्स्ट थिंग यू नीड रीच और स्प्रेड, एंड सेकंड थिंग यू नीड ट्रेनिंग। और यदि अब ये मर्जर देखोगे, आई थिंक HDFC इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन द नेटवर्क और मैक्स इज वेरी स्ट्रांग ऑन ट्रेनिंग एंड एजेंट डेवलपमेंट। So I think from that perspective, मैं मानता हूँ कि it is definitely a good merger for getting the best synergies of an insurance merger. And what about consumers? चूंकि diversified products होंगे तो उससे भी consumers का फायदा होगा? देखिए, प्रोडक्ट्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम ऐसा है कि हर प्रोडक्ट के लिए हमको IRDA का IRDA का अप्रूवल चाहिए होता है। IRDA भी काफी कंजर्वेटिव अप्रूवल देने में। तो आई थिंक इट इज मोर अ क्वेश्चन ऑफ हाउ क्विकली द रेगुलेटर कैन अप्रूव। मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई बंधन है नए प्रोडक्ट्स पे एक्सेप्ट द रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और एक और खास मेहमान लगातार इस वक्त हमारे साथ अविनाश भी बने हुए हैं। अविनाश, जहां चैलेंजेस की बात होती है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो आपको लगता है कि इस तरीके के मर्जर से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है इंश्योरेंस मार्केट में? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट कंपनीज के लिए का इतना बड़ा मार्केट शेयर है, तो सर अभी जो कंबाइंड एंटिटी है करीबन 70 लाख कस्टमर आपके होंगे, उसमें से मेरा मानना है करीबन 60 लाख से ज्यादा जो कस्टमर है वो बड़े शहरों के होंगे। तो किस तरह से एक देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी अब इंश्योरेंस की बन जाएगी, तो किस तरह से रूरल सेगमेंट जो अनटैप्ड मार्केट है, तो वहां तक क्या कोई अलग सी योजना होगी जहां अभी सोच रहे हैं पहुंचने की? देखिए, हमारी 601 ब्रांचेस होंगी। इसके बाद जैसे कि आपको हमने रिप्रेजेंटेशन में बताया कि जब मर्ज एंटिटी इमर्ज होगी तो उसमें 601 ब्रांचेस होंगी। आपने एकदम सही बात कही कि अभी अगर ये जो ब्रांचेस हैं आप इनको मैप करें इंडिया में, तो इनका टायर 1 और टियर 2 में ज़्यादा है, टियर 3 टियर 4 में थोड़ी सी कम है। तो यस, जब ये मर्जर होगा, क्योंकि हमारी पावर ज़्यादा होगी, हमारी एबिलिटी इन्वेस्टमेंट की एबिलिटी ज़्यादा होगी, हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि हम उन सब एरियाज़ को टैप करें जहाँ पे हम अब तक जा नहीं पाए हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा था कि क्योंकि हमारे बैंकिंग के जो पार्टनर्स हैं उनकी प्रेजेंस रूरल एरियाज में धीरे धीरे पिछले 5-6 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हमारे करीब 15,000 मिला के ब्रांचेज होंगी जहाँ पे हम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री को टैप कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी रूरल इंडिया में प्रेजेंस नहीं है। रूरल इंडिया में प्रेजेंस हमारे बैंकिंग पार्टनर्स के थ्रू है
लेकिन हाँ, जब ये मर्जर होगा तो जरूर एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम टियर 3, टियर 4 टाउन्स में अपनी ब्रांचेस ज्यादा खोलें और थोड़ा सा टियर 1, टियर 2 में जहां ओवरलैप है, आपको एग्जांपल देने के लिए करीब ऐसी 175 ब्रांचेस हैं दोनों एंटिटीज की जो 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं। तो हाँ, हो सकता है वहां पे हम शायद कुछ ब्रांचेस कम करें, लेकिन वही जो हम वो ब्रांचेस वहां कम करेंगे, हम जाके उनको टियर 4 और टियर 5 सिटीज में जाके खोलना चाहेंगे। ये फ्रेंचाइज को हम बढ़ाएंगे, हम कम करने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है और उसको बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। माध्यम केवल बैंकों के जरिए ही होगा? No, the other issue is we are also working very closely with the microfinance industry. The new microfinance industries that have come up, the old ones and the new ones, we also in our insurance company invested in them, invested in the equity with them for them to distribute our products, and their distribution is only in rural India. So we have tied up with 3 or 4 of these big microfinance companies that were given licenses recently by the Reserve Bank. So actually we have a relationship with 9 out of the 10 small finance banks as we stand. Mr. Singh, But just also don't forget, that's not the only way rural India develops. Rural India is also coming towards urban India, no? You people, every time you forget that the only way rural improves is by urban going to rural, but rural is also coming to India. So both things are happening. Mr. Singh, a couple of questions on the non-compete fee, 850 crores, which you will be getting over a period of, say, 7 years. How easy will it be to get through SEBI? Because SEBI has a position of not allowing non-compete fees. I'm an interested party. I should not answer that. Mr. Parekh? Well, SEBI will look at the general body resolution, and in the annual general meeting or the EGM, the promoters are not allowed to vote. So the majority of the minority will have to give a vote, and they will have to vote. Analjit and his party and his family cannot vote, and if he gets the majority of the minority approved, then SEBI should not have any problem.